Next ratio is profitability ratio. So profitability ratio is further divided into two parts that we can calculate in terms of sales, and the second we can calculate in terms of investment. In simple words, profitability ratio मतलब कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है, so that we can see how much company profitable is, and accordingly we can judge or interpret or comment about on the efficiency of the company. जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना कंपनी अच्छा है according to our interpretation. So that is the thumb rule for this ratio, for any ratio what we are going to cover in this ratio, profitability, that higher the ratio, good for the company. Higher the ratio, good for the company. In relation to sales and in relation to investment, as I said, एक तो होगा कि आपने सेल्स कितना किया है, कितना सेल्स किया है, और उस हर एक सेल के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ है. That is one way to calculate profitability ratio in terms of sales. Sales कितना हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. सेकेंड होगा इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना पैसा लगाया था और उसके ऊपर आपको क्या प्रॉफिट हुआ है. In relation to investment, what you have invested, what the person, the owner of the company has invested, and how much profit on that particular investment you are getting. So there are two, we can say, different we can say ways to calculate profitability ratios, and accordingly we can interpret according to that only. In relation to sales, there are three very important ratios. There are others also, but we are going to cover these three ratios. Gross profit ratio, which is also known as your EBDIT, or also known as gross profit margin. Operating profit, net profit in relation to sales. बहुत सिंपल रेशियोज हैं एज कंपेयर टू अदर रेशियोज. इफ यू कैन सी व्हाट वी हैव डन, जोन सा रेशियो आपको निकालना है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो जीपी ही आपको अमाउंट लेना पड़ेगा. सेल्स के रिलेशन में है तो डिवाइडेड बाय सेल्स. सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. सेल्स के रिलेशन में वी आर कैलकुलेटिंग कि सेल्स कितना हुआ, उसमें से कितना मार्जिन है ग्रॉस प्रॉफिट का, उसमें से कितना मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से कितना नेट मार्जिन निकला. सो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट. अगर आपको रेशियोज में चाहिए, यू विल मल्टीप्लाई विद 100. नहीं भी मल्टीप्लाई 100 करते हैं, यू विल गेट आंसर इन डेसिमल. दैट इज ऑल्सो ओके. सेकेंड वे, एज आई सेड, इज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट. जो आपने पैसा लगाया है कंपनी में, उसके बदले में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है. आपने 1 लाख रुपए लगाया है, फॉर एग्जांपल आपको 10% रिटर्न आ रहा है. सो 10% इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. So that is one ratio, return on investment, which is also known as ROI, or which is also known as ROCE, that is return on capital employed. And the second one is return on equity. Equity वालों को कितना रिटर्न मिल रहा है जो उन्होंने पैसा लगाया. ठीक है. सो ऑल दीज 5 ratios we are going to see in this particular video itself. First is gross profit. As I said, what is the method to calculate is gross profit divided by net sales into 100 करेंगे, you will get the answer. अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, नेट सेल्स गिवन है, यू विल कैलकुलेट इट. आई डोंट थिंक सो इट विल टेक मोर देन 30 seconds फॉर द आंसर. But if the gross profit is not given, I suppose that we all know how to calculate gross profit. अभी आपको पिछले रेशियोज में वी हैव डन दैट कि आप सेल्स में से COGS माइनस कर दें, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है. और COGS क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज आल्सो नॉट गिवन इन द सम, देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर बाय चांस नहीं गिवन है तो. एंड नेट सेल्स गिवन है यहाँ पे, नॉट सेल्स. टोटल सेल्स नहीं लेने हैं, नेट सेल्स लेने हैं. व्हाट इज नेट सेल्स? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. आपने सेल किया 1 लाख का, लेकिन 10,000 यूनिट्स जो है आपकी वापस आ गई 10,000 रुपीज की. सो नेट सेल आपका 90,000 होगा, 1 लाख नहीं होगा. सो दैट इज द थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टेक. नेट सेल्स, दैट इज टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. So simple. If you can see, sales 10 lakh 50 given, sales return COGS is given. Net sales very easily we can calculate. 1050 minus 50 करेंगे तो आपका net sales will be 10 lakh only. And COGS is already given in the sum. तो gross profit कैसे निकलेगा? Sales में से
if you can minus your COGS, that is 7500. ठीक है जी. So ये आपका आ गया GP, and GP in percentage if you need to calculate 750 GP है divided by net sales. If you will do multiply will 100, if you will do, you will get the answer. So this is going to be the case how to calculate your gross profit. Similarly with net profit, similar case with your gross profit, operating profit, and same case is going to be in case of your that net profit ratio. So this is going to be the case how to calculate. Sorry. I think did some mistake over here. This is going to be 2,50,000, not 7,50,000. So आपका जो percentage है that will be 25%. Okay. So this is gross profit. Similarly, how to calculate operating profit? Same formula is there. Operating divided by net sales. You will get the answer. Only and the point is कि operating profit कैसे calculate होगा? आपका gross profit you calculated, उसमें से आप all operating expense minus कर दीजिए, all operating incomes add कर दीजिए, you will get operating profit, which is also known as EBIT. Done. Same case, net profit divided by net sales into 100, you will get the answer net profit ratio. अब net profit कैसे निकलता है? सब सारे expense minus करके whatever you are going to get at the end, everything, or in short we can say operating profit आपने calculate किया in the last ratio, operating profit में से minus interest minus tax if you will do, you will get net profit. So this is how to calculate these ratios, which I said very simple, all three ratios. So these are the formulas: gross profit divided by net sales for gross profit, operating profit divided by sales, and net profit divided by sales. And for the profits part, the formulas are given. So this is how to calculate it. So this is the sum which we already solved in case of calculating interest coverage ratio. भी हमने calculate किया था, in that I solved it. So if we can see this all calculation we have done in that case only. So आपको GP के लिए you need this gross profit which is EBITDA, और OP के लिए you need operating profit, and net margin or net profit के लिए you need this EAT, that is earning after tax or earning after interest and tax, or which is also known as net profit or net income. So you will take that, multiply 100 नहीं करेंगे तो answer will be in decimal, which is also okay. 70% GP है, OP 61 है, NP 42% है, which seems good. नेगेटिव में नहीं है, बहुत कम नहीं है, 5% 2% का प्रॉफिट नहीं शो हो रहा, 42% नेट प्रॉफिट है, which is very good. And mainly the profitability ratio, these ratios, this GP, OP and NP are going to be more interpreted, more we can analyze in a better manner if we have past years data as well. अगर आपको last year के profit पता है, for example last year में profit 50% था, इस year 42% है, then we can interpret in a better manner. अगर आपके पास 2-3 साल का डेटा का आंसर है, का रेशियोज है, then it will be good. अगर नहीं है, then also we can by our own interpretation, by our own perception, means knowledge, we can just interpret depending upon the company, if we have certain knowledge about that. So this is done with it. So the next ratio, I'll just cover it also, return on investment ratio. So return on investment we will take in the next video itself, because we have two ratios now, return on investment and return on your equity. So we'll take in the next video itself, so that, because I don't want that this ratio, this particular video will be very long. Okay, thank you. So we'll continue the same the rest of the ratios in the next video.